Okay, welcome back to the last video for this mini project. So far हमने process data process करके using the data bricks हमने यहाँ पे अपने process container में इस monthly sales dot parquet नाम से यहाँ पे फाइल को सेव किया हुआ है. इस फाइल को हमें कॉपी करना है और कॉपी करके हमारे Azure SQL में लेके जाना है. तो Azure SQL अभी हमने क्रिएट किया नहीं है. लेट्स क्विकली क्रिएट एन Azure SQL environment. So let's go to Azure SQL. Let's select this Azure SQL. Click on create. And then select the type of the database. So we will create a SQL database, single database. So these are different types. Elastic Pool database server. We are going to create a single database. Click on create. And then उसके बाद यहाँ पे we will select our resource group, which is the one that we were using earlier, this one. And then after that we will give it a name. So let's give it a name, a database name here. So let's call it CF AZSQL DB. Okay, and then let's give it a server. So server अभी हमारे पास है नहीं. Let's create a new server. So let's give it a unique name, CF AZSQL server. Okay, CF AZSQL YouTube, something like this. And then let's give it a region. Subscription does not have access to create server in this region. Let's select a different region then. Let's select US or Asia Pacific. We can select, I think, Central India is fine. And then type of authentication, we are going to use SQL and Microsoft Entra authentication both. Set an admin. So in this we will set my own ID as admin, just the cloud ID. So you can, in your case, you would want to select your own account as the admin. And then let's create an admin here. So let's create an admin account. Let's set the password. I'm going to put a very simple password for now. Okay, I think it needs special characters. So okay, so I've set the password. Click on OK. And then in this part we want to use Elastic SQL Pool. That's fine. Workload will be development. And then the compute storage will not be serverless. We will use a different compute. We will use DTU based pricing, and we will use standard. This is the most budget friendly, and we don't need super high performant database. We just need a 10 DTU database, which would be like this much, 1400 rupees a month, which is close to $20. And then if you want a even more even smaller configuration, you can use basic, which would be just 5 DTUs, and it would be half the price. I mean, even it would be somewhat one third the price actually, and you can use that. For now I'm just going to use standard because basic is very slow, and just gonna apply that. This is an important step, otherwise you will end up paying a lot of money. And then यहाँ पे this is fine. Networking में this is again important, so I'm just gonna enable public endpoint and allow Azure services and resources to access server. Let's put this as yes, so that ADF can access it. Add my current IP address, yes. And connection policy is fine. These things are fine. Security is also fine. Ledger we don't need. These things are fine. Additional settings, leave it like that. Create, and then create. So this will create the server and the database that we need. So it will first initialize the deployment for the server and the database. So let's wait for a few minutes for it to create.
Okay, so the resource has been created. Let's go to click on go to resource and then इस database के अंदर हमें हमारा टेबल वगैरह क्रिएट करना है, राइट? So for that, let's not waste any time. Let's go to our ADF here, and inside this ADF, after running this, so ideally you would want to add the other notebooks for processing. For now, we are not, since मेरे example में मैंने बाकी टेबल्स का इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ किया नहीं है, सो मैं इन दो नोटबुक्स को ही रखूँगा, बाकी नोटबुक्स वी कैन ऐड लेटर. एंड ये स्टेजिंग है, ऐसे ही एक और प्रोसेसिंग का नोट पाइपलाइन बना लेते हैं. सो दैट्स हाउ वी नॉर्मली डू इट. एंड देन pl_mart you can have, and then inside this we will have a notebook activity like this. और इस notebook activity में we will run the monthly sales वाला notebook. So let's select the Databricks connection, and then let's select our notebook. So the notebook is here somewhere, ADF project, and ADF project में Mart, और Mart के अंदर हमारे पास है monthly sales report. Run that, and then this is fine, and then we can just test to run this again. So let's see if it is working. So when we run this, it will run the notebook and create the process file. Right after this, we want to actually copy the data into our SQL environment. So for that, उसके लिए मुझे copy activity की ज़रूरत पड़ेगी. So use copy data. Copy data के source में we are going to have source, and in this source we will have a parquet file. So हमने already parquet का बना रखा है. इसमें मैं कंटेनर का नेम स्पेसिफाई करूँगा processed, एंड इट्स ऑलरेडी पैरामीटराइज, सो हमें अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग डेटा सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइल नेम वुड बी प्रोसेस्ड के अंदर हमारे पास हमने बनाया है मंथली सेल्स, राइट? सो इट वुड बी monthly_sales.parquet. तो जो फाइल का नेम हमने डेटाब्रिक्स से सेव किया है उस फाइल को यहाँ पे रीड करने वाले हैं, एंड देन इसको रीड करके हम यहाँ पे सिंक में एक SQL में पुट करेंगे. बट SQL का कोई डेटा सेट है नहीं, तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा. न्यू डेटा सेट, search for SQL. So this will be Azure SQL. यहाँ पे this is Azure SQL database. Click continue, and this is we will need a link service. तो link service से पहले data set का नाम रख लेते हैं. Let's call it ds_azsql. Okay, and link service है नहीं तो create कर लेते हैं. मैं name ऐसे रख दूँगा. Azure SQL में subscription select करते हैं. Let's select the server name. Server name is this one, CFAZSQL YouTube. Database name will be, let's see, what's the database name? It should be CFAZSQL DB or something like that. Let's refresh that. For some reason it's not showing up. Let's see, query editor open करके देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास. CF admin का पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा. ओके, टेबल्स में यहाँ पे अभी कोई टेबल है नहीं, ठीक है. लेट्स गो टू द ADF अगेन. नाउ लेट्स सी, डेटाबेस में वी हैव मास्टर एंड CFAZSQL DB. सो हम अभी इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे. Connection type will be managed principal identity or stuff like that you can use. ठीक है, system assigned managed identity you can use, but for now मैं use करूँगा SQL authentication. यहाँ पे username will be CF admin, password whatever password I have used, and let's do a test connection. Let's see if this is working. It's working. Click on create. So link service बनेगा, and then we will create the dataset. Dataset में table name पूछ रहा है. We will select enter manually and click on OK. We don't want to import any schema. Click OK. And then यहाँ पे ये dataset में table का नाम पूछ रहा है, right? So इसको भी dynamic कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे schema,
sorry, parameters में let's create two parameters, one for schema name and the other one will be for table name. Okay, so let's go to connection and यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं. Schema name will be schema name, table name will be table name. एंड देन इस डेटा सेट को हमारे मार्ट वाले नोटबुक में आई मीन पाइपलाइन में जो कॉपी है उसको कॉपी एक्टिविटी को पास कर देंगे सिंक में AZ SQL. देन यहाँ पे वी विल पास द टेबल नेम. सो लेट्स से कि हमें DBO स्कीमा में एक मंथली सेल्स नाम का टेबल चाहिए, मंथली अंडरस्कोर सेल्स. ठीक है, एंड ये इंसर्ट होगा कि अपसर्ट होगा, यू कैन मेंशन ऑल दिस लॉजिक. सो इफ़ यू वांट टू डू एन अपसर्ट तो यहाँ पे प्रॉपर इंक्रीमेंटल लोड का लॉजिक बताना पड़ेगा. ठीक है, एंड बट हमें इंसर्ट करना है सिर्फ, एंड बल्क इंसर्ट करना है कि क्या करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. रो बाय रो करना है, बल्क इंसर्ट करना है, वी वांट टू डू अ बल्क इंसर्ट. एंड देन यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल या ऑटो क्रिएट टेबल. क्या करना है कि टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग कोई टेबल है उसको यूज़ करना चाहिए. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑटो क्रिएट टेबल. ठीक है, तो इसको ऑटो क्रिएट सेलेक्ट करेंगे. एंड अदरवाइज़ अगर तुम्हें ऑटो क्रिएट यूज़ नहीं करना है, यू वांट टू यूज़ योर ओन कस्टम. ऑटो क्रिएट में क्या होगा कि स्कीमा अपने आप डिफाइन होगा उसका, बट तुम्हें अगर कस्टम स्कीमा डिफाइन करना है यू कैन राइट अ प्री कॉपी स्क्रिप्ट. तो कॉपी करने से पहले तुम यहाँ पे कुछ क्रिएट टेबल या ड्रॉप टेबल कमांड चला सकते हो, ट्रंकेट टेबल कमांड चला सकते हो, ऑल दोज थिंग्स. राइट, सो प्री क्रिएट नॉर्मली हम क्या करेंगे कि यूज़ एग्जिस्टिंग में यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा हमारे कंट्रोल में रहेगा. ओके, एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, या सॉरी दिस वन, हाँ प्री कॉपी स्क्रिप्ट. यहाँ पे हम हमारा कमांड लिखेंगे. तो मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल का कमांड यहाँ पे. ठीक है, और ट्रंकेट टेबल से पहले मुझे यहाँ पे क्रिएट टेबल का कमांड लिखना पड़ेगा. तो मैं लिखा क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं. बट उससे भी पहले let's see if we can do that here. Pre-copy में we will have a, okay, let's make this AI generated. So let's use ChatGPT. So इसमें हमें कुछ if else वगैरह पे लिखना पड़ेगा एक्चुअली. इसके लिए मैं यहाँ पे AI से जनरेट करूँगा. create a script for Azure SQL that will check if a table exists in DB or not. If the table doesn't exist, it will create it, otherwise truncate it. ठीक है, तो मैंने ये लॉजिक लिखा है यहाँ पे, एंड देन आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट लिखा. अब यहाँ पे इट विल डू दिस एंटायर स्क्रिप्ट. ठीक है, नाउ लेट्स वेट फॉर दिस टू कंप्लीट. सो वी हैव ऑल दिस स्क्रिप्ट्स हियर, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट वांट टू run all of this script before we do the copy. Okay, so there are two methods. हम यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इसी में प्री कॉपी स्क्रिप्ट में डाल दो, या फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट एक्टिविटी भी हम ऐड कर सकते हैं बिफोर द कॉपी एक्टिविटी. तो यहाँ पे वी हैव अ स्क्रिप्ट एक्टिविटी, और स्क्रिप्ट एक्टिविटी में तुम जो स्क्रिप्ट दोगे वो उसको रन करेगा. ठीक है, फॉर नाउ वी आर जस्ट गोना कॉपी इट इनटू द प्री कॉपी स्क्रिप्ट. सो कॉपी एवरीथिंग हियर एंड देन पेस्ट इट हियर. एंड इसमें हम बस अपना टेबल नेम वगैरह और स्कीमा वगैरह डिफाइन करके रख देंगे. सो लेट्स डू दिस. सो यहाँ पे टेबल नेम को हमें डिफाइन करना है. सो दिस विल बी द टेबल नेम. टेबल नेम इज़ आवर DBO dot monthly underscore sales. Okay, this is the table name. And then if you come down, and then यहाँ पे हमें टेबल नेम लिखना है monthly sales,
एंड देन यहाँ पे हमें टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. तो मैं इसके लिए भी हमारा डेटाब्रिक्स का यूज़ करने वाला हूँ. सो हमारे पास DF में ऑलरेडी डेटा है. एंड यहाँ पे हम यूटिल्स को अगर रन करते हैं, परसेंटेज रन डॉट स्लैश यूटिल्स, एंड देन यहाँ पे हमें वो फंक्शन मिलेगा, प्रिंट करने हैं जनरेट क्रिएटेबल कमांड फॉर द DF with the table name of monthly sales. And let's see what it's giving. तो ये पूरा कॉपी करेंगे और हमारे ADF में जाके कॉपी स्क्रिप्ट में डाल देंगे. दिस इज आवर प्री स्क्रिप्ट हियर. तो इस पूरे चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं, लाइक दिस. एंड यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह में varchar लिखना है बस. varchar month will be let's say 50, fiscal year can also be varchar 50. For now it's fine. And print table created successfully, all those things. We can remove the print statement for now. We can remove this print statement here and remove this print statement here. Truncate table, we will mention the table name, monthly sales. Okay, and then let's see, all these things are there. Yeah, now it's fine. And यहाँ पे ये variable की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं थी. We can just copy this whole thing and put it as a static value like this, and then we can just remove this variable. Check if table exists. If not exist, we will do a begin, and then we will do this create command. Print statement नहीं चाहिए. Create table करेगा, then else में it will do a truncate. Okay, so that's the script we have. Now let's run this whole pipeline here, and instead of having copy data 1, let's call it copy processed, copy monthly sales. Okay, like that. And then we will just do a debug, and let's test if it is working. मंथली सेल्स रन होगा. नोटबुक वाला जो हमारे स्टोरेज अकाउंट में प्रोसेस्ड कंटेनर के अंदर फाइल रखेगा पार्केट फॉर्म में, उस फाइल को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, और रीड करके हम कॉपी एक्टिविटी के थ्रू SQL में मूव कर रहे हैं. सो वंस दिस कंप्लीट्स, वी विल हैव द डेटा इन आवर Azure SQL. So let's see. Let's wait for a few minutes. So the notebook is now running. नोटबुक कंप्लीट हो गया. नाउ इट विल रन द कॉपी एक्टिविटी. कॉपी एक्टिविटी में सबसे पहले प्री स्क्रिप्ट चलना चाहिए. आई होप इट वर्क्स. ओके, सो एक्टिविटी हैज़ कंप्लीटेड. नाउ लेट्स सी कि हमारे SQL में डेटा आया है या नहीं. सो यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, टेबल्स में db डॉट मंथली सेल्स, और इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं. लेट्स डू अ सेलेक्ट स्टार ऑन दैट. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo डॉट मंथली सेल्स. रन दिस, and we should have some data here. Okay, it's saying affected rows 0. Why is this? Okay, let's see this copy activity source. Let's do a preview data. Okay, no preview data to show. Why is that happening? Let's check the notebook.
इसको हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव तो कर दिया है माउंट पॉइंट प्रोसेस्ड मंथली सेल्स डॉट पार्केट में, तो फिर इसमें रीड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, लेट्स ट्राई टू सी what is happening. Just do a select star from parquet dot this location. Okay, इसमें तो डेटा है but somehow it's not moving the data there. So if you go to our ADF, यहाँ पे parquet में processed के अंदर monthly sales dot parquet should be the file name. Let's copy the file name from the notebook, that's much better. Monthly sales इधर है, let's copy this, process as monthly sales. Let's go to this one, ADF, let's replace this. Okay, looks correct. File path in dataset, list of files, recursive, it's okay. Let's do a preview data. Okay, it's saying there is no data, but why? Why do we not have data there? Okay, let's try to read some other file. Staging container के अंदर wwi and उसके अंदर dim date, let's say dim date.parquet. let's try to preview this. क्या इसमें हमें डेटा दिखेगा या नहीं? ओके, dim date में डेटा दिख रहा है, just not a problem. सिर्फ processed में यहाँ पे डेटा नहीं आया. This is showing us 0 bytes. Why is that? Okay, there is this monthly sales dot parquet as a folder, and inside this we have committed, started, success and part ID. This particular file we have. Let's delete this file for now, and let's delete the folder also. Let's delete all these files and click on delete, and then OK, and let's run the notebook again. Click on debug. Let's wait for the notebook to complete. ओके, मंथली सेल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया है, तो हमारे पास प्रोसेस में कुछ डेटा आना चाहिए. ओके, जब हम वो प्रोसेस रन कर रहे हैं तो ये मंथली सेल्स डॉट पार्केट फाइल भी बना रहा है और ये फोल्डर भी बना रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो वी हैव दिस पार्ट फाइल हियर लाइक दैट. लेट्स सी व्हाट इज द इशू. सो हम df राइट मोड पार्केट में सेव कर रहे हैं,
Let's do a Google search. Database, save table as parquet. Save to parquet with fixed size. Let's see. Save, and then okay, this is the mode. Okay, this is what we want. To a file name. Okay, so let's rewrite this here. Rewrite in such a way that it saves the data into one single file instead of a folder with partition. No, not like this. Let's ask ChatGPT why it is doing that. This code is generating a folder named this and also a file named this. Folder with partition content. So file name also is a bucket, but the single bucket file is empty. Creates directory when writing to path. Actual data is written into a partition file. The directory, the empty file you see is the placeholder, not the actual data. It's fine. If you want a single bucket file instead of partition data, you need to call this or repartition your data frame. Something like this. To move the file, we can write this logic here. Okay, let's try this call this method. Otherwise, we will have to make use of another method. We can just make a slight change here, like this, and in the copy activity source, we will have. We will change this to processed, and then we have monthly sales dot parquet slash, and then we can copy all the parquet files that are here. So if you see यहाँ पे जितने भी files हैं, only one of them is having dot parquet, dot snappy dot parquet. Okay, we need this file data. इसके जैसे और भी partitions हो सकते हैं, तो हमें वो सारे combine करके एक file में, मतलब एक table में लेके जाना है. So the good way would be mention the folder name like this and then do a star dot parquet. Okay, this is the right way. And then if we run this, it will work fine. Now if we run this, it will copy the actual data. Now let's wait for it to complete. It will run the notebook first and then it will run the copy data activity.
So the notebook has been completed now, and then it's doing the copy activity. Let's wait for it to complete. And एक बार हम folder का नाम देख लेते हैं. Folder name is monthly sales and dot bucket. That's fine. Let's refresh again. Okay, it failed. What's the error? Monthly sales in, there is already an object name monthly sales in database. Okay, it's actually trying to create again. Let's see the sync. Let's see the pre-copy script. So if we have this table, okay, let's see what this code is giving us. Copy this entire thing and run it here, and we will try to debug what is happening. And then run this. There is already an object. Why? So what are we getting here? Is this giving us site data? Let's create a new query. Run this. Okay, we don't have any record there. Monthly sales, maybe we have a record. Okay, now if we add a schema name equal to dview and table name. Now let's run this. Schema name, run this. Invalid column name, schema name. Okay, so it's not giving us the record. Action schema dot tables. Select star from information schema dot tables. Run this. Okay, we have table catalog, table schema and table name. Okay, that's the right way. तो ये problem था. And table schema equal to dview. So run this. Now it's working. So we'll copy this thing, go to ADF, paste it here. Now it is fixed. We will run the pipeline again. It will take around 50 seconds or so for the notebook to complete, and then the moment of truth for the copy data. Okay, so notebook complete हो गया. Copy activity is running. Let's wait for it. I think the pre-copy script is running. Now it's in progress. Let's see what is happening here. Okay, I think it has failed. What is the reason this time? The blob is missing. Please contact blob storage team if you need something. Star dot parquet or something like this. Okay, got it. Source में हमें इस तरह से मेंशन ना करके हमें वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ मेंशन करना पड़ेगा. And then we will copy this wildcard file path, select that. Container, source container will be this source container. Wildcard folder, we don't need it. And then this is the file name there. Now let's not run the notebook again. Just don't want to run this. Deactivate this for now.
run this only. Run this pipeline, it will run the copy directly. Okay, it's failed. What's the error? Okay, it's not supported. File name contains folder separators. Specify folder path in the folder path directory. Okay, wildcard में यहाँ पे problem है. So here we need to mention this like this. So so यहाँ पे हमें इसको ऐसे mention करना है. Monthly sales report dot parquet as the folder name separately in this, and star dot parquet like this. Okay, so I think this time it should work. Let's run this. Okay, so now the copy activity has successfully completed. Now let's check this query here and check our monthly sales table data. Select star from monthly sales. Let's run this. So अभी हमें यहाँ पे SQL में data दिख रहा है, which is our monthly sales data, which is like this. We are getting the profit, revenue, quantity sold, fiscal year, month and all these values. तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट अभी हमें हमारा कंप्लीट हो गया. हमने स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ फाइल, स्टेजिंग, डेटाब्रिक्स प्रोसेसिंग टू प्रोसेस्ड फाइल टू SQL डेटाबेस सारा डेटा मूव कर दिया है यूजिंग ADF, एंड ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड है. नाउ जस्ट वन स्टेप इज़ मिसिंग लास्ट. ये हमें रीएक्टिवेट करना है जो हमने टेम्पररी डीएक्टिवेट किया था. नाउ अब हमें एक लास्ट पाइपलाइन बनाना है ताकि सारा कुछ एक सिंगल पाइपलाइन में रहे, एंड दिस विल बी पाइपलाइन 1. इसको हम बोलेंगे मास्टर पाइपलाइन. सो लेट्स कॉल peer underscore master, and then let's execute this staging and master in sequence. So we have an यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसका नाम है एग्जीक्यूट पाइपलाइन, जो किसी दूसरे पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. ओके, सो विल यूज़ दिस. तो एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी किसी दूसरे पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कराएगा. तो हमने मास्टर वाला पाइपलाइन बनाया और इसके अंदर से स्टेजिंग को कॉल करेंगे, फिर मार्ट को कॉल करेंगे. तो पहला वाला है एग्जीक्यूट स्टेजिंग, और इसके अंदर सेटिंग्स में वी विल इन्वोक द PL स्टेजिंग, एंड इसको डुप्लीकेट करके वी विल कॉल द मास्टर हेयर. तो इस वाले में वी विल कॉल द मार्ट, execute mart settings, select the mart pipeline like this, and done. So this is our master pipeline. We will publish everything, click on publish. तो अभी हमें पूरा अगर प्रोसेस रन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ फाइल, इंजेक्शन एंड एवरीथिंग टिल द फाइनल SQL, हमें बस इस मास्टर पाइपलाइन को यहाँ से रन करना है. So this completes our ADF mini project and our beginners or the introductory course for ADF. For more details, please reach out to us on the comments, and you can also visit our website consoleflare.com for more information. So yeah, please do visit our website, and please reach out to us if you have any further queries. And I will see you in another video of another interesting series from Console Flare.